and we are going to talk about this. This is going to be the last topic for your second unit, and then we'll be starting our third unit from tomorrow, and we'll be talking about now specifically from tomorrow about mass communication and the things that you need to know in reference to mass communication, in reference to different media that is there in communication. So, talking about functions of communication. So, the first and foremost function of communication is information. This is the first and foremost function. Now, what do you mean by function in more general sense? Function means that uh, what kind of work, what kind of action is done by communicating, what kind of things are done by communicating, or what kind of work communication performs, what kind of function it performs. So the first thing that it does is you do communication to share information, to pass on information, to inform somebody. And even if we don't talk about information through newspapers and news channels, just think about your very general life apart from mass media. Think about your parents telling you something, okay? For example, your mother is asking you that this is what you need to go and get from the market. So she is giving you the information, आपको क्या चीज़ बाजार से खरीद कर लानी है. And maybe your father is telling you something that okay, this is a new course out there, you may try it for your summer holidays. So he is sharing information with you. Or in more mundane sense, just talk about something very casual. Let's say it is going to rain outside and you're sitting inside, and maybe your sibling, maybe your a friend comes and tells you that the weather looks nice, it is going to rain though it's more cloudy outside, let's go for a ride somewhere. So even these kind of very simple functions are performed because of this function of communication, that is information sharing, to use communication as information sharing tool. So to impart information, to share information is the biggest function of communication. और ये जो फंक्शन है ये एक बहुत छोटे और कैजुअल लेवल से लेके एक बहुत बड़े और प्रोफेशनल लेवल तक आप इसको इमेजिन कर सकते हो. Imagine somebody giving information to people involved in justice, for example lawyers, for example justice, for example policemen. You know, somebody is giving them information. So here we have seen somebody who looks a little maybe a little fishy, so you come and catch that person. इस तरीके से भी अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी काम आती है. और किस तरह से इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे एक कोई हेड अपने एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये मीटिंग की इंफॉर्मेशन है, यू हैव टू वर्क ऑन दीज पॉइंट्स. सो यू कैन इमेजिन कि कम्युनिकेशन का फंक्शन हर एक एरिया में आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ है. यू गो टू अ शॉप एंड यू टेल देम व्हाट यू वांट, दैट इज गिविंग इंफॉर्मेशन दैट आई वांट दैट थिंग, and this much of that thing I want, 2 packets, half kg, 1 kg, 10 kg. So you share information and then you get your work done. सो अपार्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टिव, हर बार ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टिव हो, लेकिन इंफॉर्मेशन शेयरिंग हमेशा ही होती है और उसी की वजह से आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं. सो इंफॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन. इसीलिए बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन को इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी बोलते हैं जब उसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम कम्युनिकेशन का यही है कि आप अपने और सामने वाले के बीच, जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कॉमन करिए, यानी इंफॉर्मेशन को शेयर करिए. और ये पर्सनल लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल तक. सो यू टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ और यू टॉक अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ. एंड लेट्स टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन इन द सेंस, जैसे आपके और किसी और कंट्री के हेड आपस में बातचीत करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और उसके बेसिस पे भी स्ट्रैटेजीज प्लान होती हैं. सो इवन फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, for national governance,
You need to share information. So this is an important function of information. आप लोग अगर ग्रुप में कोई बात करते हैं, हम लोग जैसे व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है, why that group is there? So that because you people are not physically here to receive the information from the department itself, so we need a group where we can tell you the things, and you also have one platform where you can ask us for the required information. So that is why information is the most simplest and most integral. Integral means that this is an inseparable part of communication and a function of communication. Then you have another function which is persuasion. Okay, so talking about persuasion, let's put information here so that we can also talk about persuasion in more detail. Okay, information is the most purest form of communication. Why? Because you here are not for any kind of interest serving need. That is to say that your idea to share information is to only to pass on the knowledge that you have. It's very simple, it's very pure. But as you come to the level of persuasion, as you come to the level of persuasion, this information sharing changes into some kind of result desired. Some kind of results desired. That means जब आप लोगों को इन्फॉर्म करने के बजाय उन्हें परसुएड करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर आपका आइडिया परसुएड करने का, अनुग्रह करने का, यानी कि उनको मनाने का जो रीज़न है वो ये है ताकि वो आपकी बात मान जाएं. ओके, और यहाँ पर ये जो प्योर फॉर्म है कम्युनिकेशन की वो बदल जाती है. क्यों बदल जाती है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जानकारी देना आपका काम नहीं है या आपकी इच्छा नहीं है. यहाँ पर उस जानकारी के बदले लोगों के एक्शन अलग हों, ये आपकी इच्छा है. सो हियर यू आर लुकिंग फॉर परसुएशन, दैट इज आप रिजल्ट डिजायर कर रहे हैं. आपकी इच्छा है कि आपके मुताबिक रिजल्ट आपको मिल जाए. और प्रोपोगेंडा जो है वो इसकी एक यू कुड से इट्स मोर ऑफ अ नेगेटिव connotation for the आइडिया ऑफ परसुएशन. एक नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच जब परसुएशन के साथ हम कर देते हैं तब हम उसे प्रोपोगेंडा बोल सकते हैं. यानी कि जब आप सामने वाले के इंटरेस्ट को भी नहीं ध्यान में रख रहे हो बल्कि आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए उनको मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हो, तो परसुएशन से मैनिपुलेशन पे जब आ जाते हो तो वहाँ पर आप कम्युनिकेशन को प्रोपोगेंडा के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं. और ये बेसिक फंक्शन कम्युनिकेशन का बिल्कुल नहीं है. सबसे बेसिक फंक्शन कम्युनिकेशन का है इंफॉर्मेशन, जहाँ पर जो गोल है, जो उद्देश्य है कम्युनिकेट करने का, कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसका जो रीज़न है वो सिर्फ ये है कि आप इंफॉर्मेशन को शेयर करो. Okay, this is the only reason why you are doing communication. When it comes to persuasion, ये reason बदल जाता है. Here you are looking for some desiring results, यानी कि जो आप रिजल्ट्स जिनको आप इच्छा कर रहे हो, ऐसे रिजल्ट्स की इच्छा के साथ आप परसुएशन करते हो. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपको मान लीजिए आपको अपने पेरेंट्स से किसी तरह की हेल्प चाहिए, मॉनेटरी हेल्प चाहिए, या यू वांट देम टू बाय समथिंग फॉर यू, यू वांट देम टू डू समथिंग फॉर यू, सो यू गो, यू टॉक टू देम, यू ट्राई टू परसुएड देम. ठीक है, आप उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, वो हो जाता है परसुएशन. लेकिन प्रोपोगेंडा जो है वो इसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, यानी कि जहाँ पर आप मैनिपुलेशन शुरू कर देते हैं, जहाँ पर आप अपनी बात को उसमें झूठ शामिल करके, उसमें जो फेक आइडियाज़ हैं उन्हें शामिल करके आप सामने वाले को मैनिपुलेट करना, उसे एक तरीके से धोखा देना शुरू कर देते हैं. और उसके बेसिस पे फिर आप अपने
मतलब को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट उससे चाहते हैं। ऐसा फंक्शन कम्युनिकेशन का एक नॉर्मल जस्टिफाइड फंक्शन नहीं है। परसुएशन तक ही आप उसको जस्टिफाइड फंक्शन बोल सकते हो कम्युनिकेशन का। और ये परसुएशन जो है इसको एक अच्छे रिटोरिक सेंस में एरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम से ही यूज करते आ रहे हैं लोग, और इसको एक अच्छे ओरेटर यानी कि एक अच्छे स्पीकर की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। यानी जो स्पीकर अपनी बात से शब्दों से लोगों को इतना ज़्यादा परसुएड कर दें कि वो उसकी बात मानने लग जाएं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अच्छी स्पीच से मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अच्छा बोल रहे हैं, उसमें फैक्ट्स भी अच्छे हैं और सही हैं। अगर ऐसी बातों से आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं कि वो आपकी बात माने, सो इन दैट सेंस you become more of a you could say a good speaker or an orator, and that is a function of communication. इस तरीके से persuade करना communication का एक बहुत ही important function है। इसके अलावा communication का जो function है वो है control, or you could say in a more general sense instructive function or passing on instructions। इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? इंफॉर्मेशन जैसे हमने बात करी कि ये जितने भी और फंक्शन जिनकी हम बात कर रहे हैं उन सभी में इंफॉर्मेशन शामिल है, लेकिन इंफॉर्मेशन अपने आप में एक बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ या प्योर फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसमें किसी भी और तरह के आइडियाज अटैच नहीं है, ओनली यू आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। Okay, for example, you can take a teacher and a student relationship. A teacher is passing on the information to student only for the purpose of teaching that student, और उसके अलावा कोई भी आइडिया यहाँ पर अटैच नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो हैं वो बदल जाते हैं। इंस्ट्रक्शन कैसे बदल जाते हैं? मान लीजिए आप एग्जाम में हैं तो वहाँ पर आपके जो एग्जामिनर हैं उनके आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। You have to finish your exam in 3 hours, you have to write these many words, you have to do these questions, you have to you have to make choice out of 3 and you have to attempt 2। ये जो instructions हैं, इस तरह की जब आपको कम्युनिकेशन एक्ट्स होते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन का यूज़ इंस्ट्रक्शन देने के लिए या कंट्रोल के लिए किया जाता है। और ये ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है दैट व्हेन यू हैव individuals in some kind of group and you have to manage it. Okay, and here we'll take different examples. Imagine individuals in a society and you have to manage that society. So now individuals, they're living in a society and you have to manage it. Well, how would you be managing? You would be giving them instructions. For example, how the working goes, who is going to take the decisions. Okay, panchayat will take the decision, or you will say the chairman will be making the decision, chairman with his board members will be making the decision, or chief minister for a state will be making a decision with his cabinet members. So for passing on the instructions, for having control over the community of individuals that you have, इसके लिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन का इंस्ट्रक्टिव फंक्शन के तौर पे यूज़ करा जाए। जैसे कि अगर आप किसी क्लास में हैं तो टीचर जो है वो इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ इंस्ट्रक्टिव रोल में भी आ जाता है, दैट यू कैन नॉट गो आउटसाइड फॉर बिटवीन द क्लास, और wear proper uniform to your classes, carry your notebooks with you, you are not allowed to sit with your phones or maybe your earphones or any other kind of instruction, very general instruction. Why this thing is important? It is important to manage the law and order. Law and order in a very general sense. Law and order doesn't mean that somebody is going to create crime here. लॉ एंड ऑर्डर in the sense that एक ऑर्डर जब बहुत सारे लोग अलग अलग एक साथ एक ग्रुप में होते हैं, चाहे वो कॉलेज हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, या गवर्नमेंट हो, या एक नेशन हो, स्टेट हो, तो उनको मैनेज करने के लिए आपको कुछ कॉमन रूल्स बनाने पड़ते हैं, लॉ बनाना पड़ता है जिसको सब मैनेज करें, सब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें और एक स्मूथ एनवायरनमेंट बना रहे जहाँ पर सभी लोग आराम से रहें। सो फॉर दैट पर्पज इंस्ट्रक्टिव फंक्शन जो है कम्युनिकेशन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका किस तरीके से रूल करा जा रहा है, यूज करा जा रहा है, ये डिपेंड करता है ऑन द वन हु इज गिविंग द इंस्ट्रक्शन।
यहीं पर अगर हम बात करने लग जाते हैं ऐसे लोगों की जो डिक्टेटर हैं, तो उनका कंट्रोल जो है वो ज़्यादा खराब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वो ओवर डोमिनेटिंग हो जाते हैं और वो उनके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लोगों के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक लिबरल और एक अच्छा लीडर है, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लीडर है, तो वहीं पर उसका कंट्रोल जो है वो आपको कंट्रोल के साथ साथ लिबरेटिंग भी होगा, फ्रीडम वाला भी होगा, जिससे कि यू विल गेट द एरिया और यू विल गेट द स्पेस टू ग्रो as an individual. Okay, and other than these functions you have the function of motivation, and this is an important function. Why? Because motivation means to I know you would be knowing the literal meaning of it, but motivation in sense of the function of communication means that you are choosing your words to make somebody feel positive about what they are doing, to be more energized about what they are doing, to be more hopeful about what they are doing. And this is required all the time. Imagine soldiers fighting for your country, for their country, and they have a very difficult condition. They maybe your country is is facing a very fierce challenge from the opposing army or opposing country, and then they have to give a good fight. So how will you motivate them? Your words, the leader will choose better words to motivate them, and he will be doing something which will be very tough and courageous for them to learn from himself. तो इस तरीके से जब आप मोटिवेट करते हैं, आप ऐसे शब्दों को यूज़ करते हैं जिससे कि मोटिवेशन हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो नॉर्मल कोई आपका इवेंट हो, कभी आपके एग्ज़ाम है या कोई स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स जो आपको चेयर करते हैं, वो सभी मोटिवेशन का एक एक अपना रूप है, एक अपना उसका एक साइड है जिस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं। और ये जो मोटिवेशन है ये बहुत ही कैजुअल फंक्शन लगता है कम्युनिकेशन का, लेकिन ये कैजुअल है नहीं। बहुत बार लीडर्स जो हैं वो अपनी वीक टीम को या वीक आर्मी को या एक नॉर्मल सी आर्मी को भी या नॉर्मल सी जो आपकी टीम है उसको भी बहुत बेहतरीन काम करने में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यू आर एबल टू मोटिवेट देम, and that is why a leader has this function to fulfill, to motivate. You have to take lead and you have to motivate others to do the job. This is required in organizations, in companies, this is required in security forces, this is required at government level, this is required even in your family. Maybe your family is going through something, somebody in your family needs to be motivating, and that is not necessarily always your mother or father has to do it. Maybe even a younger person can do it. It's all about passing the positive vibes to the members, whether in the family or in the group, motivating them, feeling them more hopeful about what they are doing, and then helping them achieve the target or achieve whatever they want to achieve in their lives. So in motivation is a very simple, but this is something which we all need when we do something. Even if we cook something good, we want that motivation, we want that affirmation that we have done it, okay, and we can do something better. You want recognition also. So motivation and recognition, these kind of things are important for an individual when you want to do something better with your life. Somebody who goes for a counseling is also looking for some kind of motivation. So motivation is required for to somebody who is strong, he also needs motivation. Somebody who is maybe weak in some sense, he also needs motivation. Everybody needs motivation, because nobody can be strong all the time. Even the strongest person will have his moments where he would be needing some kind of motivation to do better. Okay, so these are the basic functions, and apart from these the other functions that you will see will be more of you could say different versions of these functions. इसके अलावा और फंक्शंस अगर आप कहीं पर पढ़ते हैं तो वो इन्हीं फंक्शंस के अलग अलग आपको वर्जन लगेंगे। जैसे बहुत सारी जगहों पे इमोशनल डिपेंडेंस लिखा होगा, फॉर बिजनेस फुलफिलमेंट लिखा होगा, मार्केटिंग लिखा होगा, पीआर के लिए होगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्हीं में से निकली हुई हैं। इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड the first function, information, to understand the instructive and controlling function of communication, to understand the
function of motivation, to understand the difference between information and persuasion, and to also understand that you have to make sure you are not crossing the line